Yes, good afternoon, everyone, for all our participants and to our expert also. A very good afternoon, and thank you for participating in today's webinar. So, today's webinar is about infused water for weight loss. So, we all know that water is a very important part of our life. So, yes, but there are also some interesting facts so that water can be taken in very different ways also, and it can also help us in weight loss. So today our expert is going to discuss on this. So yes, it's a very interesting topic. So just before we start with the session, I'll just you about today's. So she's Fatima Malik, and she's done her master's in clinical nutrition and dietetics, and also she's specialized in cancer nutrition. Also, she's a holistic nutritionist all over the world. So she has also consulted in countries like USA and UAE, Malaysia, Iraq, and much more. So thank you, ma'am, for joining us today, and thank you for taking such a wonderful topic. And you will be explaining us on the various variety of water that we can use. Yes, you can start up with the session. Thank you, Yogita, for a warm introduction. Hello, guys. As we all know, weight loss is something which people want shortcut for that, right? There is no shortcut for success for weight loss. And it's like along with diet and exercise, water plays a very important role. Mainly, people come with me with the thing like we don't like the taste, we don't means like we don't have the you can say कि मन ही नहीं होता पानी पीने का. ये बहुत normal सा sentence है जो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं. So today I come with the thing that how about if we infuse our water? Infused water is also known as detox water also, and nowadays it is on hype. Infused water, but do we know कि क्या चीज में क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है infused water और detox water बनाने के लिए? Now first understand कि infused water होता क्या है? Infused water is nothing, it's normal water only. It's just what we are doing is we are adding fruits, vegetables or herbs and spices to make it flavorable, right? Now there are few things which we have to keep in mind while making infused water. The first thing is the utensil in which we are going to prepare our infused water. It should be of glass. It should be glass container. Plastic, copper, other containers should not be used. So it can be like this. It should be covered. It should not be without lid. First thing, it should be glass. Second thing, it should be covered. It should not be without lid. So these are the things which we have to keep in mind while preparing. And the second thing is now, what are things which we can use? Firstly, fruits. You can use fruits like watermelon, apple, crab seed fruit, oranges in the water. Then in the veggies, you can have cucumber, zest, lemon, then mint leaves. You can use parsley or you can say coriander, कोथमीर जिसे हम बोलते हैं. हम लीव्स तोड़कर भी यूज कर सकते हैं. बेस्ट इज कि हम जो उसकी स्टॉक है, मतलब कोथमीर वगैरह की जो स्टॉक, उसकी जो डंडियां आती हैं, उसके साथ यूज करें तो बेस्ट है. लेमन ग्रास यू कैन यूज, जिंजर यू कैन यूज. So now I will demonstrate how exactly we have to use, because many people know कि ये सारी चीजें हम detox water, infused water में ले सकते हैं, but क्या सही proportion है जिसे हमें use करना है? See, this is the glass container. This is one glass. One glass is equal to 250 ml. 250 लीटर 250 ml का एक ग्लास होता है. ठीक है. अब इस ग्लास में जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे मेरे पास वाटरमेलन है, ठीक है. सो दिस इज द परफेक्ट साइज. इतना बड़ा आपका फ्रूट भी हो सकता है, वेजीज भी हो सकता है. अगर हम 250 ml ले रहे हैं तो इसमें 1, 2 and 3
ये सही प्रपोर्शन है, मतलब 250 ml में 3 पीसेस ऑफ फ्रूट्स और वेजीज। नाउ अगर आपका सपोज मेरा इतना बड़ा वाला ग्लास जार, राइट, अब इसमें मेरे 2 ग्लासेस आए हैं, तो लाइक दैट 2 ग्लासेस में हम हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी इतने ही अमाउंट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन अब मैं जो ये डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ, मेरा वाटरमेलन और चिया सीड्स के साथ। सो नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ सीड्स, हाउ मच वी हैव टू ऐड। सी दिस इज द स्पून, नाउ दिस इज चिया सीड्स, सो आई विल फिल इट, एंड 1 टीस्पून का सही क्या है कि जो एक्सेस है वो आप अपनी फिंगर से इस तरह से निकाल लें। So this is the 1 spoon. So I can add this in 1 glass. This is the 1 glass. In 1 glass, I can add this 1 spoon. This is the correct proportion. Now, अगर आपके 2 glasses हैं एक जार में, तो आप chia seeds भी 2 spoons, 3 glass है तो 3 spoon, like that you can add. So ये मेरा watermelon chia infused water बन गया। अब हमें इससे क्या करना है? सही तरीका यह है कि इन्फ्यूज वाटर को एटलीस्ट आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स इसी तरह से रहने देना। 6 to 8 आवर्स बाद, if you want, you can strain it. If you want, you can chew the vegetables and fruits in the water and have. So you have to keep it for 6 to 8 hours so that कि इसमें जो भी nutrients हैं, जो भी water में है वो properly आ जाए, seep out हो जाए। नाउ सेकेंड थिंग इज, अगर हमें वेजीज के साथ बनाना है, ये तो फ्रूट वाला हुआ, हम अगर वेजीज के साथ बनाना है, अगेन सेम वाटर 250 ml, मेरे पास यहाँ पे मिंट लीव्स हैं, तो यू कैन हैव 2 to 3 मिंट लीव्स लाइक दिस। तुलसी मेरे ख्याल से सभी के घर में होगी, यू कैन हैव तुलसी लीव्स आल्सो, दैट इज गुड। अब यहाँ मैं मिंट लीव्स और जिंजर बना रही हूँ। अब नाउ many people ask कि जिंजर का कितना क्वांटिटी होना चाहिए। सी द राइट क्वांटिटी इज, ये हमारी फिंगर है, फिंगर में ये जो है, यहाँ जहां तक हमारा ये जो बाइफर्केशन हो रहा है, जो लाइनिंग, इतना 1 इंच होता है। यू कैन सी प्रॉपरली, ये दिस इज द वे, ये जो मैंने लिया है ये जिंजर 1 इंच। अब जिंजर का अपना एक पंजन सा टेस्ट होता है, जो हर किसी को टेस्ट अच्छा नहीं लगता। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहे तो इस तरह से, जो अपने, ये तो हमारे घर में हर किसी के यहाँ होती है, किसने तो या तो आप इसको ग्रेट कर सकते हैं इस तरह से, जिंजर को 1 इंच, या प्रॉपरली बारीक चॉप कर सकते हैं, या अगर आपको अगर आप घिस रहे हैं या चॉप कर रहे हैं तो उससे वाटर में जिंजर का फ्लेवर ज्यादा आएगा, राइट। तो अगर आपको वो पंजन सा टेस्ट नहीं पसंद, तो आप वो 1 इंच का जो पीस आपने लिया है, ये 1 इंच है, आप उसको डायरेक्ट डाल सकते, इट्स अप टू यू। मुझे पंजन सा टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं ग्रेट करके डालती हूँ इस तरह से। ओके, सो दिस वे यू कैन मेक योर वेजीज इन्फ्यूज वाटर। अब इसमें मेरे पास अभी यहाँ लेमन और कुकुम्बर की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आप चाहे तो जिस तरह से हमने वाटरमेलन के 3 पीसेस 250 ml में डाले, उसी तरह से हम लेमन और क्यूकुम्बर के भी पीसेस 2 to 3 पीसेस हम इसमें डाल सकते। नाउ कम टू द पॉइंट कि ये तो फ्रूट्स हुआ, वेजीज हुआ। नाउ व्हाट आर द हर्ब्स, स्पाइसेस जो हम यूज कर सकते हैं डिटॉक्स वाटर के लिए। सी यहाँ मैंने, I just want to give you a brief introduction about one thing. हमारे किचन में जनरली हमें ये दालचीनी है, सिनेमन स्टिक। इंडिया में हमें ये फ्लैट वाली दालचीनी मिलती है, बट फॉर इन्फ्यूज वाटर व्हाट आई प्रेफर इज दिस rolled one. It is very good. It is Ceylon or Sri Lankan cinnamon, which is very good for health, especially for weight loss, because it boosts metabolism and it is good. So here मैंने क्या किया है कि जो ये रोल्ड वाली है, इसको इस तरह से, you can see, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब सिनेमन कितनी डालनी, सी ये अगेन पानी आया। अब सिनेमन हमें सिर्फ एक पिंच, मतलब जो हमारी चुटकी में आ सके, बस पिंच डालनी है इन 1 ग्लास 250 ml, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपका पानी ज्यादा है तो आपको उतनी ही चुटकी
सिनेमन डालेंगे। अब इसमें यहाँ इसमें एप्पल भी डाल सकते हैं, आप वाटरमेलन भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने जो हर्ब्स का है ये एक बनाकर रखा है, मैंने ये रात सुबह 6 बजे का किया था, तो अभी 3 बजे तक में ये बिल्कुल अच्छे से इन्फ्यूज हो चुका है, मैंने स्ट्रेन भी कर लिया है। मैंने इसमें जीरू, अजवाइन और फैनल सीड्स डाली। अब नाउ व्हाट इज द प्रोपोर्शन? अगेन प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये इस तरह से जीरू और आप अपनी फिंगर से इसको बिल्कुल फ्लैटन कर लें, इतना जीरू। सेम प्रोपोर्शन मैंने अजवाइन इससे थोड़ा सा और कम लिया है, और सेम प्रोपोर्शन मैंने फैनल सीड्स इसमें रखा है। सो यू कैन सी द वेरी क्यूट कलर and the convocation in infused water is ready, so you can have that. आप इसका भी convocation बना सकते हैं। This is coriander seeds, साबुत धना जिससे बोलते हैं। आप अगर 1 टेबलस्पून 250 ml में ग्लास के उसमें अगर साबुत धना ओवरनाइट सोक करते हैं और मॉर्निंग में इसे लेते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर योर ब्रेकफास्ट, देन इट इज वेरी गुड, especially for hormonal imbalance, for mood swings, and best for weight loss. So these are the things which I want to share with you for infused water. Now the thing is, many people ask me, infused water is why it is good, especially for weight loss. There are n number of benefits, but I again say कि that doesn't mean कि आप अपना नॉर्मल वाटर रिप्लेस कर दे डिटॉक्स इन्फ्यूज वाटर। हमें जो 8 से 10 ग्लास पानी पीना है वो पानी तो पीना ही है, पानी को किसी चीज से रिप्लेस नहीं करना। बट यस, along with normal water we have to enrich our nutrients for weight loss and for everything we can enhance by adding this infused water. अब अगर हम थ्रू आउट द डे सच में अगर ये इन्फ्यूज वाटर पीते हैं तो हमारी क्रेविंग्स, जो बहुत सी बार शुगर क्रेविंग्स होती है, मेनी टाइम्स एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, देन हमें सोडा, या बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि वी कांट डिफरेंशिएट कि इट इज हंगर पैन और इट इज डिहाइड्रेशन। सो इन सब चीजों में दिस इन्फ्यूज वाटर हेल्प्स अ लॉट। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि वेट लॉस के लिए इन्फ्यूज वाटर इज, इट डजंट मीन कि सिर्फ ये दिन भर हम सिर्फ ये इन्फ्यूज वाटर पियेंगे तो हमें वेट लॉस मिलेगा। नो, फॉर वेट लॉस ऑफ कोर्स प्रॉपर फूड, proper exercise, and along with it, this infused water also supports. So these are the benefits. Now, along with it, this infused water also detoxifies our body. Many times nowadays we can say whatever we are eating, whatever means like now the air is also not fresh, right? So this infused water helps to eliminate all the toxins from the body. That's the reason it is very good. And in short, water is always good. One thing I just missed, so I just want to add, instead of fresh, means like normal water, you can have coconut water also. You can use coconut water also. जो नारियल का पानी आता है, नारियल का पानी भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमें नॉर्मल पानी नहीं यूज। बट इट अगेन डिपेंड्स कि आपकी और कोई कंडीशंस तो नहीं है, लाइक ब्लड प्रेशर या कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। So we have to keep in mind before using coconut water. Otherwise, normal water is good for everything. Then हमें ये चीजों का भी ध्यान रखना है कि 6 to 8 hours बाद अगर हम 6 to 8 hours उसे रख रहे हैं तो इसमें सबसे एक चीज ध्यान रखनी है कि 29 डिग्री सेल्सियस 29 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मतलब अगर आपके घर में एनवायरमेंट 29 डिग्री से कम है तो ओके फाइन, यू कैन कीप इट आउटसाइड। अगर आपका 29 से ज्यादा हॉट है टेम्परेचर तो कीप दिस इन्फ्यूज वाटर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। अदरवाइज जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने इन्फ्यूज किया है वो खराब भी हो सकते हैं, रॉटन भी हो सकते हैं, उसमें से एक अलग सी स्मेल भी आ सकती है। सो इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि आप 29 डिग्री से कम है तो उसे रेफ्रिजरेट करें इन्फ्यूज, और 6 to 8 hours के बाद चेंज द वाटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Either strain it and use that water for throughout the day for sipping, or else if you want कि आप उसमें ही रहना देना चाह रहे हैं
So sip that water and refill that container. Both the way you can do. But I maximally recommend कि एक बार अगर एक fruits तो vegetable आपने उसमें steep कर दिया है तो उसे आप strain कर दीजिए या जो fruits vegetable है उसे आप खा लीजिए और वो water throughout the day you can sip it. The next thing which we have to keep in mind is कि हमें proper hygiene maintain रखना है. हमारा जो भी ग्लास का कंटेनर है हमें अगर हम रोज डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं रोज इन्फ्यूज वाटर ले रहे हैं उसे प्रॉपर्ली वॉश करेंगे. नहीं तो बहुत सी बार ये होता है कि हमने आज ये यूज किया कल दोबारा इसी में पानी में फिल करके हमने दोबारा इसी में वेजिटेबल्स डाल दी तो उससे भी बहुत सी बार एक ग्लास के जार में भी एक लेयर बन जाती है ब्राउनिश कलर. बहुत सी बार क्यों वजह से अब ये इन्फ्यूज वाटर का कलर चेंज हो गया सो आई कैन डिफरेंशिएट. अगर मैं रोज इसी जार में यही वाटर बना रही हूँ सो मेक इट श्योर कि यू वॉश दिस कंटेनर डेली. सेकेंड, हम जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स या हर्ब्स हम जो भी यूज कर रहे हैं डिटॉक्स वाटर के लिए हम उसे भी प्रॉपर्ली वॉश करें. वॉश करने के बाद ही बहुत सी बार हम लेमन है कुकुम्बर है हम उसको विद स्किन यूज करते हैं. सो मेक इट श्योर कि जो आप स्किन के साथ यूज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली वॉश करें, प्रॉपर्ली ट्रीट करने के बाद ही इसमें यूज करें. अदरवाइज जो न्यूट्रिएंट्स जो हमें फायदा करने वाली चीजें हैं वो भी बहुत सी बार नुकसान कर सकती है. सो दीज हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड. I think more or less I cover all the points. Now it's like if you have anything to ask, if you have any queries, feel free to ask. Yes, so thank you, ma'am, for such a wonderful session and making us know that there are much more interesting ways that we can take water and consume water and be hydrated also during the summer times. So yes, we have some questions with us from our participants. So our first question is, can we take lemon with cucumber and will it not be sour during the period of time? Period of time, it's like for a long period of time you mean to say? Lemon with cucumber will not make the water sour over the period of time. See, after like when we slightly sour, but not that much. Okay, so we can consume in that. Yes. Okay, so our next question is, do we have to take warm water or the normal water if we are taking the infused water? Normal water, so we don't need to heat it. Okay, so our next question is, what is the total quantity of infused water we should take daily and how long for weight reduction? See, water is water. Okay, if I usually would recommend is, see, we need 3 liters of water in a day. So divide your water in this way. 2 liters you are drinking normal water and 1 liter you are making your detox. So in this way, 3 liters of water you can consume. And ideally, at least 3 liters of water is very much needed for weight loss. 3 and more than 3. Okay. And then along with it, what was the question? Please repeat it. It was, what is the total quantity of infused water we can take daily? But 1 liter is more than sufficient. And how long for weight loss? It is not like that. It's like for weight loss, we say, okay, daily you have to focus on your exercise. Daily you have to focus on what you are eating, right? Simultaneously, you have to focus on what you are drinking. So the thing is like that. Yes, so it also depends on our diet and the exercise routine along with water. Of course. Yes. Okay, so our next question is, how long can we continue taking it? Like, is it good to take regular or how we can take it? There is no issue. See, there is no issue in having it. But the thing is, you have to be, means like, what all ingredients is available daily, change the ingredients, it is good. Daily watermelon is not good or daily cucumber is not good. It's like that. Second thing is like we change exercise also.
right? Yes. In today cardio, today's strength training. The same way goes for the water also. And Yes. I will suggest only infused water is not going to give you the result. So Hmm. instead of having daily or it's like twice or thrice in a week is okay. Okay, fine. And our next question is, what is the best time to have this infused water, especially during the Ramzan? See, maximally this is the jeera, ajwain infused water with me. I had prepared, and it's like in Ramzan, maximum people face acidity problem. So after iftari, Right. after post iftari, 30 minutes after iftari, we all in our house drink this infused water, so that acidity Okay. and all problem we don't face. Indigestion, acidity, bloating, gas problem we don't face. And it's Okay. like So it coriander is infused water. You can have this coriander infused water early in the morning before sihori on empty stomach. So it is good. So like that, oh, what all ingredient you are having, it depends on that. Especially okay. during Okay. Okay. Thanks. And next question is, can we add all the spices, which all whatever you mentioned, all the spices, and heat the water and then make it cool and have the infused water instead of waiting for 6 to 8 hours? yes, you can do that way also. That on a question also you can prepare. In that we have to keep in mind few things. Like for example, many people it's like you have to then the quantity varies. Like I just explain you that also. Um, if you are making this jeera infused water, hot water, not this cold water, means like this. So Yes. what you have Yes. to do is Yes. instead of one glass, take 2 glasses of water. The quantity of jeera, ajwain, and fennel seed is same, but you have to boil it till it reduces to 1 glass. Then cool it and then Okay. strain it. Okay. So half of the water quantity we can consume Yes. at that time. Yes. Okay. Yes. So even yeah, so even making the water hot and infusing the herbs or the other ingredients also will help. Okay. Yes. So next question is, in the summer, can we have the outside water, like the outside water, that is all the distilleries or all the packed waters. So can we have that? To make infused water, you mean? Yes. Distillery water you can have. Other than distillery, what else? What are you in? Like Kangen water or something like that? Yeah, the all the packed waters. If we are traveling, so we need water. If the water is not there, so is the outside water good? Outside water, you just have to take precaution. Outside water is not a problem. But the thing is the container in which you are making your detox. If it is a glass bottle, Right. glass jar, then you can make it. There is no issue. But if it is a plastic Oh, bottle, then I will not go to it. okay, okay. Other question is, can we use stainless steel metal for making the? No, no, stainless steel is not recommended. Only glass. Yes, I guess. Yeah. Okay. So I'll repeat the question. So it is that can we use stainless steel metal for making the infused water? No, 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 no. No. Okay, okay. Other question is, world is infused water, in this COVID-19 period. So how helpful it will be to have infused water? See, infused water is something what you are doing in plain water. You are adding some nutrients to enrich it, right? So in this way, see like this chia water, this cinnamon, everything is good for increasing the immunity as well, removing detoxification, increasing your metabolism, good for your skin, good for your hairs. So in short, you are adding nutrients only. So it is the another form of enriching water.
So there is nothing harm. That is good only. And in current scenario where we are more focusing on our immunity, we are more concerned for for our health. So it is definitely good. And we right now in this current scenario, we can't afford disease. So it Yes. is obviously good. Yes, yes, and it can also help in building up our immunity also. Yes, definitely. Okay, so do we need to, next question is that do we need to strain the herbs whichever we add to the water? So do we need to have it along with that, or do we have to strain it and take? It's up to you. Okay, If so see, basically, I'm a person I like Jiru very much. So what I do is okay, I don't strain, but in my family, my son, my husband doesn't like. So for them, I strain, and I basically chew it and drink the water along with. So it depends on you how you like it. If you like, you can chew it. If you don't, then one thing I want to add that whenever you are making this infused water, instead of throwing this uh, veggies or herbs, you can keep. I mean, like आप इन सारी चीजों को अपने प्लांट्स में घर में प्लांट्स वगैरह में डाल सकते हैं बिकॉज इट इज अ गुड फर्टिलाइजर. okay, okay. So along with us, along with the human being, it is also helpful for the plants. Yes, So definitely. Definitely. yeah, okay. So our next question is, in this summer, can we keep the infused water outside the fridge or in the fridge also? In the fridge only it is good. See, I told the temperature. You just check your home temperature. If it is 20, it is less than 29, then you can keep it outside. If it is more than 29, then you have to keep it in the fridge. So you have to keep that thing in mind. Because if we are adding vegetables and fruits to that, so if we are keeping it out of the fridge, so in the normal temperature, it may taste a bit like, a bit stale. So that's why. That's the reason. That's the reason. That's the reason to keep it. If it is means like the temperature is more, then you have to keep it in the fridge only. Okay, okay. But otherwise, if the room temperature is normal, then we can keep it outside. Okay, Yes. fine. Okay, so yes, I guess we have covered up all the questions from our participants. So thank you for answering all of them very briefly and also explaining in such a beautiful way. So thank you, ma'am, for conducting today's session.